Good morning, class level students. Today in this video we will start the new chapter in mathematics, that is conic section. Under this chapter conic section we have three different parts: parabola, hyperbola, ellipse, and then we have applications of the conic sections where we will use these things in practical life. Okay, so we will start with first parabola. Now first we will understand what is a definition of parabola. Definition क्या होता है? What is parabola? It is a locus. Locus means it is a path. I think these things we have discussed and discussing about circle. Locus means a path of a moving point. Okay. So if I say it is a locus, that is path of a moving point satisfying a particular condition. What is that condition here that we need to understand? It is a path of a moving point such that its distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line. Okay, then that path which will come out, that is called as parabola. For example, this is a moving point P. This is a moving point. Let's discuss this in a pictorial format. Okay, this is a moving point P. It will move in such a way, okay, that is its point from its distance from a fixed point, that this is a fixed point, okay, and this is a fixed line, the line which is not changing and the point which is not changing. So it will move in such a way that its distance from this and from this line is always equal. For example, PF is equals to PF. This will be equal. Then this point will move in the path, and that path is called parabola. So a parabola will look like this. Okay, it will look like this. So this path will move in such a way. This point will move in such a way that at every point, if this point is here, then again, if you find the distance from here and here, they are equal. If you get it from here, then the point P from here and from here, they are equal. If this point is P here, then again these distances are equal. So the distance of this point P from a fixed point and a fixed line, okay, the distances are equal, and that path is called as parabola. Okay, next, now let's talk about this fixed point and fixed line. This fixed point is called as focus, and this fixed line is called as directrix. Okay, focus and directrix. Understood the definition, class? Okay, and we understand what is definition. Now there are different types of parabola which you need to deal with. Okay, so let's discuss about those parabolas. Types of parabola. Okay, now whenever we are talking about the parabola, we are talking about standard parabolas. This is in our syllabus, that is standard one. If I say standard, what does that mean? That means that is the vertex is at origin. The vertex is at 0, 0. What is the vertex and everything I will discuss after some time. Okay. Now, सबसे पहला को हम बोलते हैं right-handed parabola. Right-handed parabola. If I say right-handed parabola, how the right-handed parabola will look like? This is the x-axis, this is y-axis. A right-handed parabola will look like this. Opening towards right, that is positive x-axis taraf khulega. This is called right-handed parabola, where this is the focus, this is the vertex, okay, and the directrix is here. These things we will discuss in detail after some time. Now just have to remember how the figure is there and what is the equation. The equation is y square equals to 4ax plus x ki taraf khulega. We have to study like this: y square equals to something into x. Okay, that something will be 4a. Okay, now how to go for all those things we will discuss one by one. For the time being, only have to remember this thing. A क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, वो सब बाद में बात करते हैं. ठीक है ना? Okay, so this is called right-handed parabola. The next is called as left-handed parabola. Now what is left-handed parabola? Again, left-handed parabola क्या होगा? This is x-axis, this is y-axis. It is opening towards left hand. That means towards negative x-axis, where this is the focus and this is the vertex. See, the vertex is at 0, 0. That means it's a standard parabola. Okay, what is this equation?
y square equals to minus 4ax. We have to study like this, y square equals to minus something into x. ऐसे पढ़ना पड़ेगा. Okay, next upward parabola. Upward parabola. Now if I say upward parabola, then what will happen? It will open towards upward direction, that is positive y-axis. ऐसे करके, where this is the focus and this is the vertex. इसका इक्वेशन क्या होगा? x square equals to 4ay. That is x square equals to something into y. Okay. Next is downward parabola. Downward parabola. Now downward parabola, what will happen? This is x-axis, this is y-axis. It will open towards downward direction, that is negative y-axis. So this is the focus and this is the vertex. इसका इक्वेशन क्या होगा? x square equals to minus 4ay. That is x square equals to minus something into y. So it is opening towards plus x-axis, towards plus x-axis, minus x-axis, plus y-axis, minus y-axis. Okay. Now what is the main thing about this chapter is that the questions are very simple, beta. The only thing you need to understand is मैं इसका और इसका पूरा कुंडली निकाल के बताऊंगा और तुम्हें इसका और इसका खुद से अपने कॉपी में बनाना है. The कुंडलीज, what are the things required? Vertex क्या है, focus क्या है, directrix क्या है, equation of directrix क्या है. These things we'll discuss one by one. So I will do 2 of them. The rest 2 you have to do it on your own. Okay, in your notebook, and then you have to cross check with the book whether you're getting the correct values or not. Okay, you understand? If you understand that part, then the questions are not a big issue, class. The questions are very simple. Okay, class. So we will discuss in detail everything. Right-handed parabola, that is towards positive x-axis, y square equals to 4ax. Okay, now what is this a? That you need to understand. So first, सब कुछ हम फिगर में बात करेंगे, बड़ा करके फिगर बनाएंगे, so that everything you can understand very in detail. So right-handed parabola will look like this. This is a right-handed parabola. Okay, class. Okay, now this is an x-axis and this is a y-axis. अच्छे से ये समझना क्योंकि यही है चैप्टर. चैप्टर मतलब यही है, ये समझना बहुत जरूरी है. Now first of all, you from here, you have to imagine this way, y square equals to something into x. इसको 4a के साथ इक्वल करोगे, from the get the value of a. Okay, now what is a? A is the length of from vertex to the focus. Length होता है. What is a? A is called length. Okay, so whatever you get the value of a here, we know the focus will be somewhere here. So what is the coordinate of focus? A, 0, where this length is a. ये जानना बहुत जरूरी है. इस length को हम क्या बोलते हैं? A units. Again I'm telling you, A is not the vertex. A is the length. Please try to understand. A is the length, and we know the vertex is in this side. Okay, like for example, let's take an example also, side by side, so they can understand. For example, you have equation y square equals to 16 into x. तो इसको तुम कंपेयर करोगे, तो what I am getting? 4a equals to 16. Then what is a? 8. Okay, बाबरे, a is 4. इसका मतलब what will happen? This is towards x-axis खुल रहा है. This is the parabola. From the vertex, where the vertex is 0, 0. So where the vertex is at 0, 0. Okay. From 0, 0, you have to take 4 units. 1, 2, 3, 4. 4 units पे focus होगा. That means the focus is 4, 0. You understand? Okay. So you understand what is focus. अब a distance अंदर की तरफ गया था. अब a distance पीछे की तरफ आओ. Vertex से. Again, this distance is what? A. But what is this coordinate? Can I say minus a, 0? Okay. The distance is a, the length is a, but the vertex is minus a, 0. From here you make a perpendicular line. Now this is called directrix. इसको हम क्या बोलते हैं? Directrix. That fixed line. And that fixed point focus is a, 0. Done. And this is what? Vertex 0, 0. तो क्या क्या चीज हमने पढ़ा? Vertex पढ़ा. तो what is vertex? 0, 0. दूसरा क्या पढ़ा? Focus पढ़ा. What is focus? A, 0. Done. Next, तीसरा हम पढ़ेंगे axis. What is an axis? यहाँ पे एक ही axis है. What is an axis? Axis means what? Line along which the whole figure can superimpose on each other, or we can say align on each other.
तो इस पैराबोला को अगर मैं फोल्ड करूं तो बहुत तरीके से फोल्ड कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करूं, ऐसे करके, तो एग्जैक्टली दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला विल अलाइन विद दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला, और दिस पार्ट, अगर इसको मैं ऐसे करके फोल्ड करूं, then this part of the parabola will align with this part of the parabola. Now this line, along this line where we are folding and is superimposing on each other, or we can say coinciding with each other, then this line is called axis. Okay, you understand what is an axis? Axis is a line along which if we fold, they coincide with each other. That is called axis. So what is an axis here? Axis is x-axis. So what is an equation of axis? So in case of equation, x-axis का equation क्या होगा? So at every point on the x-axis, this we studied in straight line, and every point on the x-axis, y coordinate is fixed 0. So equation of x-axis is what? Y equals to 0. Am I clear? This is the equation of x-axis, or we can say equation of the axis of the parabola, right-handed parabola. You understand how to get the axis, class? Okay, next. What is the equation of directrix? Equation of directrix क्या है? This is the line of the directrix. At every point on the directrix, which coordinate is fixed? X is minus a, comma 0 here, minus a, comma y1, minus a, comma y2, minus a, comma y3. Here minus a, comma minus y1. So x is minus a, it is fixed. So what is the equation of directrix? X equals to minus a. You understand how to understand? Equation कैसे निकाला? So we understand what is vertex. Since we are dealing with always standard parabola, the vertex will be always 0, 0. Okay, what is A? A is the length between vertex and focus. Coordinate will be what? Whether the coordinate will be a, 0, whether it is minus a, 0, or 0, a, 0, minus a, that depends on the type of parabola we are dealing with. We know this length is a, and this is on the x-axis, so the coordinate is a, 0. Okay. In the next time we will understand very nicely. So what is A? A is the length actually. And ठीक उसके opposite चले जाओ, that will give you the directrix, how the directrix is going on. Okay. The last part is lattice vector. यहाँ से एक line बनाओ. So this is called lattice vector. Okay. Let me see the exact spelling. So next one is lattice vector. Now what is lattice vector? Lattice vector is AB. What you need to understand here? Equation and length. Equation is very easy. See, this line is called lattice vector. इसका equation क्या होगा? So every point on this line, which coordinate is fixed? X equals to A is fixed. Y will change. So what is equation of lattice vector? Equation will be x equals to a. Okay, now we are interested in length of lattice vector. Okay, so I will teach you how to calculate the length, but for doing the questions you only have to remember the value, because that value, that expression is like a formula. That expression is same for all the types of parabola. Lattice vector का जो length है वो 4a होता है, 4 times a, where a is what? The length between vertex and focus. This is fixed 4a for every type of parabola, right-handed, left-handed, upward, downward, सबके लिए value same है 4a. But I will teach you how to calculate that value, which is not required. But please listen carefully so that you can run. If you forget the length, the formula of the length, you can calculate on your own. So the next job is we are interested in length of lattice vector. Now, how to go for the length of lattice vector? That means, can I say the length AB? Okay. Now, since this figure is symmetric along x-axis, why is symmetric? Because the axis is x. X-axis is the axis. Symmetric is what? Along that I can fold it and it will coincide with each other. So it is symmetric. That means this length is equal to this length. You understand this? Since it is symmetric, मतलब ये length और ये length equal होगा. तो अगर मैं ये length पता कर लूँ, तो twice कर दूंगा तो हो जाएगा. अब ये length है क्या? ये length है y coordinate इसका. You understand this? Okay. So इसका coordinate क्या होगा? करें से x coordinate a है, and y coordinate l ले लो. This is l. Okay. तो करें से this length is called l. So if I do twice l, if we calculate the l value and if I do twice of l, we will get the answer, length of lattice vector. So my job is to calculate this l. Okay. Now see.
Since A, the point A, lie on parabola, we can say it is on the parabola. That means it will satisfy the equation L square equals to 4A into A. That is L square equals to 4A square. Now what is L? Plus minus 2A. That means this is plus 2A and this is minus 2A. समझ में आ गया? Okay, that means this coordinate is plus 2A and this is minus 2A. So what is length? Therefore, AB equals to, can I say 2 into L, that is 4A. Plus or minus shows the coordinate, but length is 2A. So don't get confused with length and the coordinate class. Again I am telling you, length is something different. Coordinate depends on where the line is, along the x-axis, along the y-axis, where the point is. But this L is the length. Okay, length है 2A. लेकिन इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट माइनस 2 हो जाएगा. So this is the length of latest sector 4A, and this will remain same. In similar fashion, I will do one more, that is downward parabola. The rest two, you will match these things from the book, from the refresher, whether you are reading the same thing or not. Okay, so let's go for the downward parabola. Okay class, now we are discussing about downward parabola. Downward involves negative y की तरफ खुलेगा. That means x square equals to minus 4ay. ठीक है, minus 4ay. How to imagine it as? इसको imagine करना है x equals to minus something into y. From there you compare and you can get the value of a. ठीक है, जैसे for example, if you want to take an example, तो x square equals to minus 16 into y. तो अगर कंपेयर करूंगा तो 4a 16 हो जाएगा. तो what is a? 4 is 16. A is 4. So if I say a is 4, that means the length of vertex and the focus is 4. Length, ठीक है, length है 4. तो इसका अगर फिगर बनाए तो कैसा बनेगा फिगर? Let's see. So downward parabola, this is the x-axis and this is y-axis. So the downward parabola will look like this. Right class? Okay. So this is the vertex 0, 0 and the focus is somewhere here. अब फोकस यहां पे मुझे पता है. अब वर्टेक्स और फोकस के बीच में लेंथ कितना है? 4. वहां पे यहां पे कितना है? A is the length, right? This length is A. And what is this vertex? This is lying on the y-axis. So can I say 0, minus A? समझो, चीजों को समझो. Length is A. The distance between vertex and focus is A length. But this coordinate is 0, minus A. Because it is lying on the y-axis and towards negative y-axis 0, minus A. Clear? अब उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट चले जाएंगे वर्टेक्स से. तो यहां से जो बनेगा that is called what? Directrix. Right class? So this directrix, what is this? Length is again A. Then this coordinate is 0, A. Clear? Directrix मिल गया. Similarly, what is this? इसको क्या बोलेंगे हम? This is what? Latest sector AB. Clear class? अब एक एक करके सब बात करते हैं. मुझे क्या क्या मिल गया? पहला vertex मिल गया. Where is the vertex? 0, 0. Next I got the focus. Where is the focus? 0, minus A. Okay, third we need axis. Now along which line this parabola is symmetric? कहां से फोल्ड करूं? तो मुझे ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा. तो अराउंड दिस लाइन आई एम फोल्डिंग. तो कैन आई से दिस y axis? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस? इक्वेशन ऑफ y axis. तो y axis में कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स होता है? x is always 0. तो कैन आई से x equals to 0. Along y axis we take any point, x is always 0. So I can say the equation is x equals to 0. Clear class? Next, directrix. Equation of directrix. तो equation of directrix कैसे निकालेंगे? This is the directrix. Which coordinate is fixed? देखो, at every point here x is 0, y is here पर x is x1, some x1 वैल्यू आएगा लेकिन y a रहेगा. यहाँ x2 होगा, y a रहेगा. So always y equals to a fixed है. So y equals to a is the equation of directrix. Now the last part is latest sector. Again the same issue. Okay, here also we will do the same thing. We'll get the, now what is latest sector? This line is the latest sector AB. So इसका इक्वेशन क्या होगा? पहले हम इक्वेशन के साथ डील करते हैं. इक्वेशन
तो हियर दिस इज द लाइन, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है? एट एवरी पॉइंट विच कोऑर्डिनेट इज फिक्स? y is minus a because x is changing. See, इस पॉइंट पे इसका x का वैल्यू अलग होगा, इसका x का वैल्यू अलग होगा, इसका x का वैल्यू अलग होगा, लेकिन हर जगह y का वैल्यू फिक्स है, माइनस है. सो इक्वेशन इज y इक्वल्स टू माइनस a. Clear? Now we are interested in length of latest vector. Now same way formula will remain 4a ही आएगा, but I will show you the calculation. तो length निकालेंगे. Again I told you this is a symmetric figure, that means this is equal to this. So if I calculate this length, for example, this length is L. Now what is this coordinate? इसका x वैल्यू कितना है? L. और इसका y वैल्यू कितना है? माइनस a. ये समझ में आ गया? इसका L वैल्यू, this is L. That is L is x coordinate and y is minus a. So since we can say, since a, L comma minus a lie on parabola. Again I am telling you, this is not required, but I am just showing you. You have to only remember the formula of latest vector. But I can say this satisfies the equation. तो x की जगह L square minus 4a into minus a, y की जगह minus a, तो L equals to plus minus 2a आ जाएगा. That means this value will be plus 2a and this value will be minus 2a. Clear? But length is 2a only. Therefore, what is the length? Length of latest vector. Length of latest vector will be equal to 2 into L, that is 4a. It will always come 4a only later. Okay, class. Same fashion way you have to do second and third. I discussed first one and fourth one. Your job is to go for left-handed parabola, that is second one, and upward parabola, that is third one. Do it on your own. Now we will do few questions. I will write down the questions on the board only and we will solve it. Okay? Let's start with the question. Okay, class. The first question. I will do hardly one or two questions, because all the questions are similar type. You only need to understand is the previous thing, what we discussed. वो अगर आ रहा है तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, देखो मैं क्या क्या सोचता हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन and confirm the vertex is at origin. That means it is a standard parabola passing through the point 3, minus 4 and symmetric about y-axis. So now listen very carefully. In every question there will be something be given which will help you to identify the type of parabola you are dealing with. Your job is to take out those things first. Identify करना बहुत जरूरी, because we have 4 types of parabola. राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. तुम्हें जब तक यही पता ना चले कि कौन सा पैराबोला के साथ हम डील कर रहे हैं तो तुम इक्वेशन निकालोगे कैसे? तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन, द टाइप ऑफ पैराबोला यू आर डीलिंग विद. क्लियर? ओके, तो तुम्हें वो कुछ कीवर्ड्स या कुछ few points, important points you need to understand, which will help us to understand that which type of parabola we are dealing with. यहां पे वो सब क्या है? Symmetric about y-axis. मतलब y axis is the axis. Axis क्या है? Y axis. तो y axis मतलब क्या? या तो अपवर्ड पैराबोला और या तो डाउनवर्ड पैराबोला. ये पहला चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बोला है, मतलब या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि y में ऐसे करके फोल्ड करेंगे इससे y से, और क्या ये सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस है? नहीं, ये सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस है क्योंकि अलोंग x एक्सिस आई एम फोल्डिंग. ओके क्लास, तो अब मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि since this word is written to you symmetric about y axis, that means I am dealing with either this one or this one. Now ये है कि ये है, तो अगर ये वाला होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x square equals to 4ay. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x square equals to minus 4ay. इक्वेशन तो मिल गया. I only need a. ये इक्वेशन है, मुझे सिर्फ a का वैल्यू पता करना पड़ेगा. Whether it's coming on the screen or not, again that is a big tension. Yes, it's coming. Okay, so we understand since it is symmetric about y-axis, that means either it can be upward parabola or downward parabola. अगर अपवर्ड हुआ तो ये इक्वेशन होगा, डाउनवर्ड हुआ तो ये इक्वेशन. वही इक्वेशन तो निकालना है मेरे. ठीक है बेटा, लेकिन इससे मुझे क्या नहीं पता? ये नहीं पता. सो माय जॉब इज टू कैलकुलेट. अनदर थिंग, इन दोनों में से कौन सा होगा? चलो 4 में से मैंने 2 बना दिया. पहले मेरे पास 4 ऑप्शंस थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब मुझे इस लाइन से क्या पता चला? इस वर्ड से क्या पता चला कि ये आके ये होगा. अब तुम्हें नेक्स्ट की थिंग्स, कीवर्ड्स कुछ सर्च करना है क्वेश्चन में जिससे मुझे कंफर्म हो जाए अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है. वो कौन सा है? पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4.
तो पहले तुम ये चेक करो 3 माइनस 4 है कहां पे। एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस -4, सब है। तो क्या ये पैराबोला कभी भी इस पॉइंट से पास करेगा? ये तो पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है ना, मतलब ये वाला पैराबोला पास करेगा। दैट मींस वी आर डीलिंग विद नॉट दिस वन बट दिस वन। क्या अंडरस्टैंड? ओके, तो हम ये सब स्टार्ट करेंगे अभी। सिंस द पैराबोला वी कैन से द रिक्वायर्ड पैराबोला, तो क्या क्या चीज सोचने के बाद मेरे को पता चला, कंफर्म हुआ कि डाउनवर्ड पैराबोला है, दैट विल बी राइट। सिंस द रिक्वायर्ड पैराबोला is symmetric along y-axis and passing through 3, -4. Therefore, it is downward parabola. Downward parabola. अब मुझे समझ में आ गया, confirm downward parabola. Therefore, what is the equation? Equation of parabola क्या हो जाएगा? x square equals to -4ay. I'm confirmed the equation is x square equals to -. और वो फिगर तुम यहां बना सकते हो। अब मुझे कंफर्म हो गया, अब मैं वो फिगर बना सकता हूं ऐसे करके। Where this is what vertex and here is somewhere focus and is passing through a point 3, -4. The point is P. Okay. अब इक्वेशन में क्या नहीं पता? A नहीं पता। Now your job is to think how to calculate A. उसके लिए तुम अलग अलग कहानी दिया रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन में, वो तुम्हें खुद से सोचना है। बट ये रखना पड़ेगा, ए इज द लेंथ बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। क्या लेंथ दिया हुआ है तुमको? नहीं दिया हुआ है। क्या तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट्रिक्स भी दिया होता तो वी नो जितना ये लेंथ होता है उतना ये भी लेंथ होता है। क्लियर? तो क्या दिया है? मुझे दिया ये पॉइंट पास कर रहा है। तो सिंस P 3, -4 lie on पैराबोला, तो सेटिस्फाई करा दो। दिस इंप्लाइज 9 एक्स डाल दो इक्वल्स टू -4a इंटू -4। तो व्हाट इज 9? 16a। एंड व्हाट इज a? 9/16 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 आए, 3 3 9, 4 4 16 प्लस हो जाएगा। व्हाट इज a? 9/16। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन x square equals to -4 a की जगह 9/16 y। ठीक है, a की जगह 9/16 डाल दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 4 4 16 -9/4 y। Job is done. So what is x square? This is the required equation. So try to understand each and everything nicely, class. So this is the equation we got. Now review करते हैं। सबसे पहला काम, read the question and try to understand which type of parabola we are dealing with. क्या वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है? उसके लिए कुछ की थिंग्स दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया था सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वहां से मुझे पता चला कि ऐसा होगा। कहीं पे फोकस का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर फोकस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, दैट मींस आइदर इट विल बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। अब देखना है पॉजिटिव एक्स में लाई कर रहा है कि नेगेटिव एक्स में लाई कर रहा है। ठीक है क्लास? सो ये चीज समझना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ लाई कर रहा है कि नेगेटिव एक्स की तरफ लाई कर रहा है। सो लेट मी डू फ्यू मोर सम्स। ओके क्लास, नाउ सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड y plus 3 equals to 0 as a डायरेक्ट्रिक्स। ऑल्सो फाइंड इट्स फोकस। ठीक है, तो क्या करें? पता करना पड़ेगा किस टाइप का है, कुछ की थिंग सर्च करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स ओरिजिन में चारों के चारों का वर्टेक्स ओरिजिन में होता है, इट्स नॉट अ बिग इशू। बट डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है y plus 3 equals to -3. So what is the equation of directrix given? Equation of directrix. Correct? Say y equals to -3 is given. y plus 3 equals to 0, y equals to -3. तो अब तुम खुद सोचो, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। y equals to -3 मतलब कौन सा लाइन? This is -3, y is equals to -3, y -3 comma x comma -3, x2 comma -3, minus x minus 3. That means this is the directrix equation. This is the directrix. Y is always -3. Do you understand class? ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो मतलब ये होगा पैराबोला।
इस पैराबोला वर्टेक्स के ऑपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये समझ में आ रहा है? वेयर व्हाट इज दिस? इफ दिस पॉइंट इज -3 तो कैन आई से दिस लेंथ इज 3। सिमिलरली इसके ऑपोजिट लेंथ 3 चला जाता है, यहां पे फोकस होगा। इसे समझ में आ रहा है? तो ये चीज वैसे समझा रहा हूं आपको ओरली, हम यही चीज यहां भी करेंगे। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द इनिशियल 4 डिस्क्रिप्शंस व्हिच वी डिस्कस्ड। अगर वो डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है तो यहां से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है क्लास? सो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू -3। तो फिगर में क्या दिख रहा है? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। y इक्वल्स टू -3 इज वेयर दिस इज y इक्वल्स टू -3। तो y इक्वल्स टू -3 का अगर मैं लाइन प्लॉट करूं, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने पढ़ाया था ना आपको, x एंड y इज ऑलवेज -3 एंड x इज 0 1 -1, ये सब याद है तुमको? ओके, तो 0 -3 सब है, 1 -3 है, -1 -3 है। That means this is the equation of line of directrix. हो गया, where this point is 0, -3. Can I say this length is 3? Length is 3. Okay, therefore focus कहां होगा? ठीक उतना ही यहां पे, this length is also 3. And what is this point? तो ये point क्या होगा? Can I say 0, 3? That means the parabola will be somewhere like this. Okay, where this length is. Okay. Now, since the equation directrix y equals to -3, okay, this implies focus is at 0, 3 and the parabola is the required parabola is which type of upward parabola? देखो, मैं कोई रटने वाला कहानी नहीं बता रहा आपको, मैं जो दिख रहा है वहां से मैंने पता किया, मैंने डायरेक्ट्रिक्स का लाइन से पता किया कि मेरा पैराबोला होगा कैसा। अगर डायरेक्ट्रिक्स ऐसा है तो पैराबोला कंफर्म ऐसा होगा, देखने में और कुछ आ रहा है ही नहीं, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, होने से तो मैं सोचता ना। ओके, अपवर्ड पैराबोला कितना हो जाएगा? x² इक्वल्स टू 4ay, ठीक है, x² इक्वल्स टू 4ay। नाउ व्हाट इज a? We know a is the length between vertex and focus. So what is the length? Length is 3. So can I say x² equals to 4 to 12y, since a is 3. So you need to understand what is a. A is the length. The x² equals to 12y is the equation. Clear class? समझ में आ रहा है कैसे सोच रहा हूं मैं? ये जानना बहुत जरूरी, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। Okay class, the last portion of this topic. Find the equation of the parabola with vertex at 0, 0 and focus at 0, 2. This is the type of question where the given data are more than enough. You don't need to think anything. कैसे? Focus कितना दिया हुआ है? 0, 2. ठीक, चलो, ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। फोकस कहाँ है? 0, 2. 0, 2 किधर होता है भैया? इधर होता है। फोकस 0, 2. That means parabola, upward parabola होगा, I'm confirm about it, it's not a big issue. Where this length is what? 2, right? वर्टेक्स से फोकस तक का लेंथ 2 है। इसका मतलब ठीक उतना ही लेंथ अगर मैं नीचे चले जाऊं, then what is this point? यहां से जो निकलेगा डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये पॉइंट कितना होगा? 0, -2 हो गया। फिगर इस फोकस से सबको समझ में आ गया बेटा, और कुछ चाहिए नहीं मेरे को, फोकस और वर्टेक्स दे दिया है बस। यहाँ पे सिमेट्रिक सोचने का जरूरत नहीं है, जहां दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दिस इज सब व्हिच आई एम डूइंग एट दैट। देयरफॉर दिस इंप्लाइज व्हाट इज a? a is 2, लेंथ a is 2। ये देख के नहीं बोला a is 2, ये लेंथ देख के बोला मैंने a is 2। समझ में आ रहा है? Since the parabola is upward, therefore x² equals to 4ay, that is x² equals to 4 2 8y, equation of parabola मिल गया। x² equals to 8y, 4a we know 2, 4 2 8 8y हो गया। First part is done. Also find the equation of directrix. Now equation of directrix क्या होगा भैया? Equation of directrix क्या होगा? यहाँ पे, यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है? देखो कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है। यहाँ पे x0, यहाँ पे x का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे x का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन y का वैल्यू ऑलवेज -2 होगा, इधर x का वैल्यू चेंज होगा,
y का वैल्यू -2 ही होगा, so y equals to -2, that is y plus 2 equals to 0. Job is done, class. Okay, so this is the end of this video. In the next video we'll start with ellipse.